Hello students, I am Isha Rajput, Assistant Professor at the Department of Electrical and Electronics Engineering at ABS Engineering College, Ghaziabad. So welcome to the second lecture, Indian Energy Scenario and Sectorial Energy Consumption. So contents of lecture are Introduction, Energy Conservation, Planning, Installed Energy Capacity, Demand, Sector-wise Energy Consumption in India. So students, as we have discussed in the last lecture, energy is one of the significant inputs for the economic development of any country. In the case of developing countries, the energy sector assumes a crucial importance in view of the growing energy needs requiring enormous investments to meet them. So students, energy scenario. Energy scenario is nothing but its demand versus generation status. Actually, before planning, we must understand current demand versus generation status. Demand के हिसाब से generation का status, right? So for this, we have to know past data and present data. So here you can see the past data. So first you can see the data of 2019. So it's the data for 9 January 2019 electricity coverage. So it's 99.7%, right? Installed capacity, it was 3,71,054.12 megawatt. If we talk about share of fossil energy, it was 79.8%. Share of renewable energy, it was 17.3%. If we talk about greenhouse gas emissions from electricity generation in 2017, it was 2,194.74 metric tons carbon dioxide. Because एनर्जी सिनारियो की बात अगर हम करें तो सिर्फ हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात नहीं करेंगे, लॉसेस की भी बात करेंगे, कौन कौन सी गैसेस एमिट हो रही हैं उसकी भी हम एनालिसिस करेंगे, राइट? एवरेज इलेक्ट्रिसिटी यूज की बात अगर हम करें 2018-19 का डेटा अगर हम देखें तो इट वाज 1181 किलोवाट आवर पर कैपिटा, राइट? ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस अगर देखें तो 2017-18 में इसका डेटा था 21.04%. रेजिडेंशियल कंजम्पशन था 24.76% 2018-19 में, एंड इंडस्ट्रियल कंजम्पशन वाज 41.16%. एग्रीकल्चर कंजम्पशन वाज 17.69%. कॉमर्शियल कंजम्पशन वाज 8.24%. ट्रैक्शन कंजम्पशन वाज 1.52%. and share of private sector in generation, it was 46% in March 2019, right? Now we talk about institutions. तो अगर हम टोटल पावर की बात करें कि जो पावर का जो पूरा कंट्रोलिंग है वो कहाँ पर होता है, तो दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ पावर. मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पॉलिसी सेटिंग वो कहाँ पर होती है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, राइट? और रिन्यूएबल के लिए एकदम सेपरेट बनाया गया है, दैट इज responsibility for renewable energy, that is under Ministry of New and Renewable Energy. बट जब जनरेशन होता है, चाहे रिन्यूएबल का हो चाहे आपका फॉसिल फ्यूल के थ्रू हो, तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट इफेक्ट होता ही है, राइट? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट जो है दैट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट? अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर लॉ, इसके अंडर में आता है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, राइट? नेक्स्ट, इंस्टॉल्ड जनरेशन कैपेसिटी एज ऑन 30th June 2022. एक्चुअली इट इज करंट डेटा. सो इफ वी टॉक अबाउट करंट डेटा फॉर सेंट्रल सेक्टर, स्टेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सो फॉर सेंट्रल सेक्टर इट इज 99,005 megawatt, 24.6% of total energy. For state sector, it is 1,04,969 megawatt and 26% of total energy. For private sector, it is 1,99,785 megawatt
and 49.5% of total energy, right? So this is the current data. It is on 30th June, right? So for the analysis point of view, we have to we should know past data, present data for future planning, right? It is very important slide. Here we can see past versus future of electricity demand, right? And here we can see the demand graph for various sectors: industry, domestic, agriculture, commercial, railways, others, cooking, EVS, etc. Right? So here you can see from 2001 to 2015 and up to 2030. Right? Aggregate electricity demand could grow from 949 watt hour in 2015 to between 2074 watt hour and 2785 watt hour in 2030. Future electricity demand may grow from 3.9 and 4.2% CAGR compared to 5.2% in the past. What is CAGR? This is compound interest growth rate, right? So here you can see efficiency increase हो रही है. यहाँ पर पहले 6.5% है, उसके बाद 7% है, फिर लास्ट में 7.5% है. तो अगर एफिशिएंसी हम इंक्रीज करते हैं इक्विपमेंट्स की, अगर अप्लायंसेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो क्या होता है, डिमांड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिमांड रिड्यूस हो रही है. डिमांड रिड्यूस होने का मतलब ये नहीं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस हो जाएगा. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा और बढ़ेगा, बट क्या होगा कि उसका एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा. हमारे अप्लायंसेस का एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा, इक्विपमेंट्स का एनर्जी कंजम्पशन कम हो जाएगा. का मतलब क्या है कि हमारी इक्विपमेंट्स की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? स्टैटिस्टिक्स शो दैट डिमांड विल रिड्यूस. माय क्वेश्चन इज हाउ एंड व्हाई? Answer is strategic planning and policy support for energy efficiency and conservation, right? So you can see that by analyzing the data from 2001 to 2015 and then from 2016 to 2020 or 21, 22, we can plan for future, right? That is till 2030, right? तो past का डेटा अगर हमारे पास है, प्रेजेंट का डेटा अगर हमारे पास है, तो हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं. और प्लानिंग किस तरह से कर सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो अप्लायंसेस हैं, उनकी एफिशिएंसी अगर इंक्रीज हो जाए, देन वी कैन रिड्यूस द डिमांड, राइट? Now next, sector-wise energy consumption in India. Now here in this slide we will see sector-wise energy consumption in various sectors. So in figure 1 you can see sector-wise energy consumption. The major commercial energy consuming sectors in country is industry, right? It is 44%. The industrial sector consumes almost 44% of total commercial energy consumption, followed by transport, right? Transport sector, the energy consumption of this sector is growing at a rapid rate of 16% per annum, which is next only to China, because we all know that China is मैक्सिमम, मतलब चाइना का जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो मैक्सिमम कंज्यूमिंग सेक्टर है, ठीक है? दिस सेक्टर ऑलमोस्ट कंज्यूम्स अराउंड 40% ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, राइट? बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्शन पीरियड, दैट इज 2030, आउट ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट एनर्जी डिमांड, रोड व्हीकल्स वुड अकाउंट फॉर 86%, followed by aviation at 9%. Railways, marine and others are expected to consume 5%, right? If we talk about residential, commercial, services and agriculture sector, there exists
a wide difference between consumption pattern of the rural and urban households. रूरल एंड अर्बन हाउसहोल्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में. The rural households depend upon biomass to meet 85% of their cooking needs. We all know that, right? While urban households meet 56% of their cooking needs through LPG, right? Almost 70% of the population in India is rural household, which accounts for only 42% of demand for oil, gas, and electricity. The use of electricity is growing rapidly in the residential sector. Of the total electricity demand in the domestic sector, 70% is used for lighting purpose, while the balance 30% is accounted for refrigeration, air conditioning, and other electrical gadgets. The energy consumption, especially for commercial and services activities, is expected to grow rapidly due to high growth rate in commercial establishment, hotels, shopping malls, IT parks, and hospitality industry. सबको पता है शॉपिंग मॉल्स, नए नए शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, राइट? तो ऑब्वियस ही बात है कि एनर्जी का डिमांड इंक्रीज होगा ही होगा, राइट? Specific energy consumption of major industry sectors in India is much higher compared to global benchmark. You can see this 1.1 table. Here, these are major industries: iron and steel, cement, fertilizer, pulp and paper, chlor-alkali, aluminium, sugar. So these are major industry, and you can see this is having higher, this is having the major consumption, specific energy consumption as compared to world, right? You can see here, right? So if we talk about the electricity consumption in agriculture sector, sector it has increased at a much faster rate as compared to other sectors during the last 4 decades. Right? Now, this is the overall analysis. Electricity consumption, sector-wise analysis. The industrial service sectors are largest users of electricity in India, accounting for 74% of total final consumption. Together, iron and steel, chemicals and petrochemicals and textiles and leather are the industries with the highest electricity consumption. The service sector includes agriculture, demand for water pumping, and forestry. The residential sector is the third largest electricity consumer at 25% of total demand. Remaining consumption is used for rail transport. You can see in this graph also, right? These are references. Thank you.